So this question appeared in 71st BPSC Mains. You can pause the screen and read the question. The question says, Parliament's power to amend the constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power. Can Parliament, under Article 368, destroy the basic structure of the Constitution when it enjoys an absolute majority in the Parliament? It is a long question carrying 38 marks. Today, let's decode this question. How much should you write? And how your content should look like. First, let us understand what is the examiner really asking. You should underline 4 keywords one by one. First is Parliament's power. Next, limited power. Article 368. Basic structure. For basic structure, I am representing with BS. And fifth is absolute. Absolute majority. Now remove all the extra words from the question. Now again, reframe the question. The question will become, can Parliament destroy the basic structure under Article 368 merely because it has an absolute majority? ये question का real demand है. If you cannot reduce a long question into one simple sentence, then please understand that you have not decoded it. Now let us identify the hidden demands of the question. Demand 1 says about, this is demand 1, mention about Article 368. Demand 2 is why the Parliament power is called a limited power. This is demand 2. Demand 3 is talking about or mentioning about the basic structure. And demand 4, this is demand 4, it talks about, does an absolute majority remove constitutional limitations? So these are the 4 demands that you have to write in your 38 mark long answer. Now let us build the answer structure. For a 38 mark answer, don't write randomly. Divide your answer into parts. First would be your introduction. In long question, you can write introduction of about 5 to 6 lines. In short answer, you generally write 2 to 3 lines introduction, because that is the only way you can answer short, because time भी उतना कम रहता है ना हमारे पास. After writing introduction, you'll have to write the body of the answer. Now body में आपको थोड़ा innovative होना पड़ेगा. अच्छा, इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखोगे? आप डिफाइन करोगे आर्टिकल 368 को, उसके मीनिंग को बता सकते हो एंड उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से लिंक करते हुए अपने आंसर की इंट्रोडक्शन को आप लिख सकते हो. नाउ इन द बॉडी व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड इट इनटू दीज 4 डिमांड्स. 368 के बारे में बताते हुए, पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड अमेंडिंग पावर क्यों है उसे बताते हुए, एंड देन बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आप बताओगे. जब आप बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताओगे, यू कैन राइट फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यू कैन यूज फ्लो चार्ट हियर एंड यू विल आंसर डिमांड 4. क्या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने पर पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है? अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर हो सकती है उसके पास? तो आपका आंसर होगा ऑब्वियसली नो, कि हमारे संविधान में ऐसा लिखा है. हम लोग फॉलो क्या करते हैं? हम लोग फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हम लोग फॉलो करते हैं. ये कीवर्ड है आपके इस क्वेश्चन का जो आप आंसर में लिखोगे. सो साथ में आप वैल्यू एडिशन
के लिए क्या लिखोगे? लैंडमार्क केसेस, है ना? जैसे शंकरी प्रसाद केस आप मेंशन कर सकते हो, शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस. These are your value addition. Okay? In body, अगर आपको लगे कि पूरे अभी भी आंसर इनसफिशिएंट है, what you will do, आप बेसिक स्ट्रक्चर के फेवर में लिखोगे कुछ पॉइंट्स एंड कुछ पॉइंट्स उसके अगेंस्ट में, जैसे कि जुडिशियल ओवर रीच हो जाता है, एसओपी सेपरेशन ऑफ पावर को इन्फ्रिंज करता है. तो ये करके आपका एक पेज में एक और ये पेज ऐड हो जाएगा एंड देन यू विल राइट कंक्लूजन. In value addition can also mention way forward. Now this would be a complete 38 marker answer.